Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 12 of Programming Fundamental. In the previous lecture, we were working on two-dimensional array. In this lecture, we will review one-dimensional array as well as two-dimensional array, and we will do some programming practices using one-dimensional array and two-dimensional array. So let's start from the term array. It is a finite collection of similar data items. By similar, we mean that all data items must have the same type. So first of all, array is not a simple variable, rather array is a collection of similar data items. And this collection is finite collection. It is not an infinite, rather it is finite collection of similar data item. And by similar we mean that all data items must have the same type. If the array is of type integer, then all data items in this array would be integer, and if the array is of type float, then all the data item present in that array would be float, and if the array type is character, then all the data items present in the array would be character. So when the type is integer, it means that all data items must have the type integer. So we have two kinds of arrays, one-dimensional array and multi-dimensional array. In one-dimensional array, it is a list of elements. I have summarized some of the characteristics of one-dimensional array. The first thing you must remember is that it is simply a single list of elements. Each element must be the same type, mean if they are integer, then all elements should be integer. Consist of contiguous memory locations. When we are talking about the memory locations of the array, always remember that data elements in array stored in contiguous memory allocation, and contiguous mean one after another, or you can say consecutive memory locations. The lowest address corresponds to the first element and the highest address corresponds to the last element. So when we are talking about the first element of the array, it would be the lowest address, and as soon as we will move from the first to second and third and up to so on up to last element, the address of the memory raises, and the last element would have the highest address in the array. Let's have some memory correspondence. If we have an array int c of 10, it means that we have an array named as c of type int and would have 10 values. int c of 10 का मीन मतलब ये होगा कि हमारे पास जो अरे है वो 10 वैल्यूज़ के लिए होगा, और 10 जो वैल्यूज़ हैं उनकी सब की टाइप जो है वो इंटीजर होगी. सो द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस अरे वुड बी referred as c of 0, then c of 1 and c of 2. And when we are talking about the term c of 0, the first element of this array c, let's say that the first element 24 is assigned to the c of 0. Similarly, if 59 is assigned at c of 1 and 35 is assigned at c of 2, and if the correspondence memory is checked, c of 0 24, c of 1 59, c of 2 35 and so on. इस तरीके से हम इसे वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं.
तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट आपके सामने है ये कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर यहाँ पे 2 बाइट हैं तो अगले 2 बाइट जो है वो C(1) के हैं एंड नेक्स्ट 2 बाइट्स जो है वो C(2) पे हैं, C(2) के लिए हैं एंड सिमिलरली द नेक्स्ट 2 बाइट्स जो है वो C(3) के लिए हैं. So it would start from here, the minimum address would start from C(0) and the maximum address would go up to C(9) and the addresses would be consecutive, or you can say the contiguous memory allocation is given to this array. So using loop we can enter data in the array, as if we do this by using this method it would be a lengthy one. So you can do this via loop. I equal to 0, I is lesser than equal to 9, I plus plus. So the first time value of I is 0. The first value that would enter would be C(0). As already stated that array in C++ and Java start from the location 0. So it doesn't start from 1 as it start from 0. So if the capacity of the array is 10, then the first element would be referred as C(0) and the last element would be referred as C(9). So similarly, I equal to 0, I lesser than equal to 9, first time the value of I is 0, the first value that would enter would be C(0), then C(1), then C(2), then C(3) up to C(9). हमारी वैल्यूज़ जो है वो इनपुट हो जाएंगी इस तरीके से. We have already discussed in the previous lecture. Okay, let's start two-dimension array. We have already discussed it in detail. Two-dimension array. Let's have a review on two-dimension array. A two-dimension array has two subscript or indexes. So when we say that it is one-dimension array, there would be only one subscript. For example, over here, C of I is only one subscript. But when we are talking about the term two-dimension array, it would have two subscript. The first subscript refer to the row and the second subscript would refer to the columns. So in two-dimension array, data is stored in the form of rows and columns. The first subscript would represent row and the second subscript would represent column. Two-dimensional array is also called multi-dimensional array. When we are talking about declaration of two-dimensional array, to declare a two-dimensional array, we have int, hub, square bracket 4 and then square bracket 3. If we are using array in C++, the declaration would get this form. And if you are using Java, the declaration of two-dimensional array would get this form. So let's talk about the declaration. The name of the array is hub. Either you are doing programming in C++ or Java, the name of the array is hub. Over here, the hub is the array name, and similarly in Java, here hub is the array name. The type of the array element is integer. So in both cases, either in C++ or Java, I have declared it the type integer like this, and in Java we have to place int over here. So there is a difference in declaration. In the syntax declaration difference is there. Please keep it in mind when if you are doing C++, declare two-dimensional array in this form, and if you are using Java, then declare two-dimensional array in this form.
So this is the name of the two-dimensional array, hub, and this is the type of two-dimensional array, that is int. The dimension to be 2 pair of bracket mean over here this is one bracket, one pair, and this is the second pair. So the first pair of bracket would represent row number of rows, and the second pair would represent number of columns. So in first pair it is 4, that represent that 4 number of rows, and in second pair it is 3, it would represent as 3 number of columns. Similarly in Java we have 2 pairs. In the first pair, the value in the first pair 4 represent number of rows, and the value in the second pair represent number of columns. So in C++ we have an array named as hub. It's a two-dimensional array having 4 rows and 3 columns and of type int. And in Java we have two-dimensional array hub, and this 2 pair of brackets shows that it's a two-dimensional array, and this int tells that the type of the array is integer, and over here this number 4 would represent number of rows, and in the second pair 3 represent number of columns. So if we have the array of 4 rows and 3 columns, then the number of element of this array 4 rows and 3 columns would be 12. 4 rows and 3 columns would have 12 elements in the array. अगर हम इसकी स्टोरेज लोकेशन एलोकेशन के बारे में बात करें टू डायमेंशन अरे की, तो it is store element on contiguous memory locations as in one dimension array, but representation is quite different. So if we have 3 by 2 matrices, 3 rows and 2 columns, the first element would be referred as 0 0. 0 mean first row, first column. This element would be referred as 0 1. 0 mean first row, second column. Rows and columns start from the number 0. So first row, first column would be represented as 0 0, and first row, second column would be represented as 0 1. Over here, second row, first column, second row, second column. Third row, first column, third row, second column. So always keep in mind that even in two-dimensional array, the subscript would start from 0, not from 1. So for rows and columns, for both rows and columns, the subscript would start from 0. So the first element would be referred as 0 0, mean first row and first column. Let's have an example of two-dimensional array. In the previous lecture, हमने टू डायमेंशन अरे, दो टू डायमेंशन अरे 3 by 3 के हमने उन्हें ऐड किया था. तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं टू डायमेंशन अरे 2 by 3 के. ए भी हमारे पास 2 by 3 का है, मीन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और बी भी हमारे पास जो है वो 2 by 3 का है, 2 rows and 3 columns. These are the rows and these are the columns. So the normal procedure of subtraction for matrices, if we need to subtract A minus B, or you can say if you need to subtract B from A, in this method, first
row first column 0 0 5 and 0 0 of B, 5 minus 3, 10 minus 8, 0 1 minus 0 1. Similarly 0 2 minus 0 2, then 1 0 minus 1 0, 1 1 minus 1 1, 1 2 minus 1 2. So the value you would get 2 2 15 6 minus 3 and 2. So dear student, this is for you to attempt to write code for this program. Already you have done this as 3 by 3 matrices and you have done the addition of 2 matrices. Similarly, no change, you can do it by using the same method. Simply declare 2 by 3 matrices rather than 3 by 3 matrices, and where you have placed plus, over there you can use the notation minus and you will get the result of a minus b. सो ये वाली असाइनमेंट जो है वो आप लोग करें. एडिशन मैंने आप लोगों को कर दी है C++ में भी और जावा में भी, तो आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन का काम खुद ही कर लें. सिर्फ उसके लिए ये है कि आपने जो है वो 3 by 3 की जगह पे 2 by 3 का मैट्रिक्स जो है वो डिक्लेयर करने हैं. तीनों मैट्रिक्स ए बी 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 और रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्स बी, और उसमें आप जो है वो ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसीजर करें. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई चीज़ आपने जो है वो नई नहीं करनी, उसी तरीके से लूप्स लगानी है. बस सिंपल ये है कि जहाँ पे आपने प्लस किया हुआ है वहाँ पे आप माइनस यूज़ करेंगे और आप जो है वो इस तरह से सब्ट्रैक्शन जो है वो मैट्रिसेस की कर सकते हैं. आपने एडिशन किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन आपने ये खुद करना. Okay dear students, one thing very much important related to one dimension array or linear array, that is searching, finding the location of the given data item in the array, and if the item is not found then search is unsuccessful. सर्चिंग क्या होती है कि आपने एक अरे में लेट्स से कि 10 वैल्यूज़ का अरे है और उसमें एक आइटम जो है वो आपने सर्च करना है, और आइटम अगर आपको मिल जाए तो आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो अरे में किस पोजीशन पे है, और अगर आइटम आपको नहीं मिलता तो आपने ये बताना है कि जी सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड. सो दो ही चीज़ें हैं, अगर आइटम मिल जाए तो सर्च सक्सेसफुल और उसकी लोकेशन बतानी है, और अगर आइटम ना मिले तो सर्च अनसक्सेसफुल. लेट्स स्टार्ट इट. इन C++ सिमिलरली आप एक अरे डिक्लेयर करेंगे 10 वैल्यूज़ का, x, then a simple variable I, then item, a simple variable. So we have an array x of 10 values, a variable I, simple variable, and an item to search. So first of all, using loop, आप 0 से 9 तक लूप इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें आप वैल्यू इनपुट करेंगे अरे. तो ये वाली जो लूप है दैट वुड बी यूज टू इनपुट वैल्यूज इन द अरे. नेक्स्ट एंटर आइटम टू सर्च, सीन आइटम, इससे आपका आइटम इनपुट हो जाएगा जो आपने सर्च करना, और फिर आप आई जो वेरिएबल है उसको 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे और वाइल लूप का इस्तेमाल करें यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. वाइल आई इज़ लेसर देन इक्वल टू 9 एंड एक्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू आइटम. अब वाइल में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये दो कंडीशन से मिलके बना है. फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन एंड सेकंड कंडीशन इज दिस वन, एंड दीज टू कंडीशंस आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड. तो एंड का मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एंड का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा.
अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा. सो देर इज ओनली वन चांस to get the expression true, that is if both the conditions are true. If any of the condition gets false or both the condition gets false, then the whole expression gets false. So only one way to get the expression true is that when both the condition gets true. एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी फिर भी आपका पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा अगर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ. तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर से दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा. सो लूप को आप 0 से स्टार्ट करें, आई को, आई लेसर देन इक्वल टू 9. हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 9 तक हैं, इसलिए हम इसकी फ़र्स्ट कंडीशन जो है वो 9 तक ही उसको सर्च करेंगे. आगे 10 तक हम सर्चिंग नहीं लेके जाएंगे, हमारी सर्चिंग 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी. और फिर हर एलिमेंट को आइटम के साथ चेक किया जाएगा. अगर आइटम नहीं मिलेगा, इफ़ आइटम नॉट फाउंड, नॉट इक्वल टू आइटम, इफ़ x of 0 not equal to item, then this condition is true. So if x of I equal to item, this condition gets false and loop would not continue. So this loop would continue until or unless I is lesser than equal to 9 and x of I not equal to item. So any of the condition, if I becomes greater than 9 or x of I become equal to item, this expression would get false and loop would not continue. So first time the value of I is 0, I is lesser than equal to 9, the condition is true. Then x of I mean when the value of I is 0, x of 0 not equal to item, first element would be compared with this item. If it is not equal to item, then loop continue, control enter into the body of the loop where we have I plus plus, mean where the value of I would become 1. Again first condition is checked, 1 is lesser than equal to 9, true. Again x of I, now I is 1, mean x of 1, second element of the array would be compared with item. If it is not equal to item, again this condition is true. Again control enter into the loop and the value of I become 2. So for 2 this condition is checked, this is true definitely, and x of 2, third element is compared with item. So the loop continues and each item is compared with item variable, value in the item variable, and when the value of the item variable becomes the same as of the item of the array, the condition gets false. तो कंडीशन उस वक्त तक ट्रू रहेगी जब तक x of I नॉट इक्वल टू आइटम. जब जैसे ही उसे आइटम मिल जाएगा, इक्वल टू आइटम हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप आपकी रुक जाएगी. अब लूप जो है वो रुकने की दो पोजीशन है उसके पास, या तो वो I ग्रेटर देन 9 हो जाए, क्योंकि हमें I ग्रेटर देन 9 पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी वैल्यूज़ लेसर देन इक्वल टू 9 तक है, या फिर आइटम मिल जाए. अगर आइटम मिल जाता है तो फिर भी लूप रुक जाएगी, या I की वैल्यू 10 हो जाएगी तो फिर भी लूप रुक जाएगी. तो I की वैल्यू 10 हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आइटम नहीं मिला. लेकिन अगर I की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 9 तक लूप रुक जाती है तो इसका मतलब यह है कि हमें आइटम कहीं ना कहीं अरे में मिल गया है और हमारी लूप रुक गई है. तो उसके लिए सिंपल चेक ये है कि इफ़ I इज़ लेसर देन इक्वल टू 9, लूप हमारी 9 से लेस या इक्वल पे रुक गई है, तो इसका मतलब यह है कि हमें आइटम मिल गया है, और जो आइटम मिला है उसके लिए हम कहेंगे कि जी सर्च सक्सेसफुल एंड लोकेशन इक्वल टू I, वो आइटम हमारा I पे था
और यहाँ पे उसे मैंने i+1 लिखा है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो अरे है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन 0 होती है। तो इसलिए अगर हम जो है आइटम हमें जो है वो 5th पोजीशन पे मिलता है तो सिंपल आई तो उसे 4 कहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए i+1 लिखा है ताकि आप एग्जैक्ट उसकी पोजीशन आपको पता चल जाए। लेकिन अगर i लेसर देन इक्वल टू 9 नहीं है, i की वैल्यू 10 हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन कभी भी जो है वो फॉल्स नहीं हुई, आइटम उसे कहीं पे भी नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि आप सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड। तो अगर i की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 9 है तो उसका मतलब यह है कि आइटम हमें मिल गया है कहीं पे, लूप कहीं इन बिटवीन ही रुक गई है और सर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई है, और जो i की वैल्यू है वही उसकी लोकेशन है एलिमेंट की। लेकिन अगर i की वैल्यू 10 हो गई है तो उसका मतलब यह है कि हमें आइटम कहीं पे नहीं मिला, क्योंकि अगर मिल जाता तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं पे फॉल्स हो जाती। तो चूंकि आइटम नहीं मिला इस वजह से ये फॉल्स हुई है, और आई की वैल्यू 10 हो गई है, इसलिए हम कहेंगे सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड। अब ये देखें इसका आउटपुट। फर्स्ट करेंगे, मैंने ये 10 वैल्यूज़ जो है वो एंटर की हैं। उसके बाद एंटर आइटम टू सर्च द आइटम you need to search, let's say that was 56. First time 56 is compared with this one, then with this element, then with this element, then with this element, and with this element. When 56 is compared with this element, this is 56 equal to 56. Over here the loop would stop continuing, or you can say loop would start working, stop working. यहाँ पे हमारी लूप जो है वो रुक जाएगी, और उसके बाद सर्च सक्सेसफुल। और 56 हमारा किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो लोकेशन हमारी 5 आ गई। अब अगर i+1 ना किया जाता तो यहाँ पे लोकेशन 4 आनी थी। उसकी वजह ये थी कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 और 4, तो इस वजह से उसको i+1 किया गया, सो दैट द एग्जैक्ट लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। सो एज 56 इज ऑन द 5th लोकेशन, so location that would be 5. Similarly, for other case, for worst case, let's say we have these values 12 23 45 56 67 up to 55, or item which need to be searched is that is 88. So 88 is compared with first element, then second element, then third element, fourth, fifth, up to the last element, and no match is there. So search unsuccessful, item not found, this 88 is not present in this list. So this is searching. यही प्रोग्राम अगर हम जावा में करें, देखें जी, ये हमने अरे डिक्लेयर किया 10 वैल्यूज़ का। उसके बाद 10 वैल्यूज़ लूप लगा के हमने इनपुट की, स्ट्रिंग लिया और फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर डॉट पार्स इंट से कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और फिर एक्स ऑफ आई। सो द फर्स्ट वैल्यू वुड बी एक्स ऑफ 0, then x of 1, then x of 2, then x of 3, up to x of 9 we have entered value in the array. Then enter item to search, again string, and then string is converted into integer, and then item. This is the item which you need to search in the array. This procedure is same. Simply start from 0. The first condition I lesser than equal to 9 and x of I not equal to item. So AND operator works same in C++ as in Java. So the working of logical operator AND is similar in both languages. If first condition is true and second condition is true, then the whole expression is true. And if any of the condition gets false, the expression becomes false. So this loop would continue until the value of I is lesser than equal to 9 and the item doesn't match with the variable item.
तो जब तक आइटम की वैल्यू एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती तब तक, और जब तक आई लेसर देन इक्वल टू 9 है तब तक ये लूप चलेगी। अगर आइटम कहीं पे मैच कर जाता है अरे के एलिमेंट के साथ तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी लूप जो है वो वहीं पे रुक जाएगी। सो वी हैव स्टार्टेड द लूप फ्रॉम 0. First condition is true, then x of 0 not equal to item. First element is compared with the item, and if it is not equal to item, then we will go for I plus plus, and I plus plus mean the value of I would become 1. Then again first condition true, then x of 1 not equal to item, it is again compared. If it is not equal to item, then we will go for the next value of I, that is 2. Similarly, this loop would continue. The logic is same. If I is lesser than equal to 9, it means that we have got the item anywhere in the list, and if the value of I becomes 10, that would mean that we haven't found any item in the list of the array, and or you can say in the list of the element. So the simple check is if I is lesser than equal to 9, search successful, location equal to I plus 1. Similarly, चूंकि यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लोकेशन को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसे 1 ऐड कर लें, और अगर I लेसर देन इक्वल टू 9 नहीं है, I becomes 10, it means that loop is terminated because of first condition. So item is not found in the list, search is unsuccessful, item not found. इसको रन करें। ट्वेल्व, 13, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 88, 99. Enter item to search. Let's say it is 67. Search successful and location is 6. That was simply 1 is added. Let's check it out. Over here simply 1 is concatenated with this one, so you can remove over here 1. Now it would print 6. Okay ji, so this is the code, you can run it. The location is 3. 34 has to be searched and the location is 3. Let's run it again. Let's say the element you need to search is 100. Search unsuccessful, item not found. Okay ji, so this was the searching using Java. Hopefully आप सारे लोगों को समझ आ रही होगी. Thank you very much.